नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुच्ची गोटे नुआ भिडियो को आपमि अच्छा आशा कर भलि थे मुझे बहुत ही भल अच्छी आम ओडिया पाठशाला को आप स्वागत। तो चलतु आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th बायोलोजी आउ किछिटा पार्ट बाकी रही जमीक सीड। तो सीड आम आज पढ़ा तो पूर्व मुझे पढ़ी थी डबल फर्टिलाइजेशन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किछिटा थिला। तो आपण देखी ना जा पूर्व भिडियो देखी दिखाँ चैनल को जाइए देखी दिंतु फास्ट भिडटा थी काली ही अपलोड करी। तो देखो आज पढ़ा आम कौन ना सीड सीड कौन इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने मन रखी था जमीती कि आम जाना कौन एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो फाइनल प्रोडक्ट माने सब टोटाली सब हो सारा पर लास्ट बाहर कौन ना सीड तमें सब आम जो एतिक जिनस पढ़ले सब सीड पर ही पढ़ले सीड सीना थिले आमको पुणी गछ हम पुणी तार गछटा बड़ हो पुणी तार फल देव माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पुणी सीड हम। तो यहाँ हूँ आम रिसाइकल प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस चले सेमती तापर एमती फेज चले आउर वंश वृद्धि हुए ठीक अच्छे। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एटा हूँ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल माने आम जो कहते कौन सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स भीतर सीड्स थाए। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट कटिलिडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस सीड कोट तार गोटे थाए द कटिलिडन 1.15 ए रे 1.15 ए रे कटिलिडन अच्छे ये कौन देखिए टे हाँ यहाँ देख देख एटा हूँ कटिलिडन माइक्रोपाइल एटा कटिलिडन आर अच्छे जो सीड कोट एटा देखो एटा हूँ सीड कोट तले थाए कटिलिडन एटा हूँ रूट टिप एंडोस्पर्म। तापर देखिए आम कौन अच्छी देखो of the embryo are simple structures generally thick and swollen due to storage of food reserves. Mature seeds may be non-albuminous or ex-albuminous. ता भीतर थाए आम जमी पढ़ी कौन ना जिते सीड्स थाए सीड्सटा केमी कौन है कि बाहर को बाहर ना सीड्स ता भीतर जर्मिनेट होती थाए मैंने थाए सेमती तार जो न्यूट्रिशन सब प्रोटीन सब पाई फुलिकी तार फाटी जाए मंजीटा फाटी जाए तापर से कौन हुए ना बाहर को आसिक डेवलपमेंट हुए। सॉरी डेवलपमेंट हुए। तो non-albuminous ex-albuminous non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development जमीक P है ग्राउंडनट है albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example है wheat maize barley casserole occasionally in some seeds such as black pepper and beet remains of nucleus are also persistent. This residual persistent nucleus is the perisperm. तो पेरिस्पर्म क्या कहबा आम जानी पारे तो ये सिंपली वर्ड लिखाई किसी भी बुझीबार ना यहाँ खाली नॉर्मल थियोरी जिनस ये खाली मैंने पढ़ी जानीपारे। इंटिग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल harden as tough protective and cost the micropyle remains as a small pore the seed coat. This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed mature its water content is reduced and seed become relatively dry 10 to 15% moisture by mass. तो जिते मैंने कम्प्लीट द फैसिलिटी एंट्री ऑक्सीजन वाटर द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन माने जो तार वाटर जो थाए तो ड्राए हो जाए 1 मिनट प्लीज। तो आम पढ़ले पेरिकार्प कौन पेरिकार्प सरला आम देखा ए पेरिस्पर्म सरला। Integuments of ovules harden as top protective seed coats. The micropyle remains as a small pore in the seed coat
स्मॉल पोर माने सीड कोट रे किछि छोट पोर गोटे थाए द फैसिलिटेड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एज द सीड मैचेस इट्स वाटर कंटेंट माने से जो पोर थाए जो सीड कोट रे गोटे पोर माने गोटे छोट होल टाइप रे थाए जहाँद्वारा कि ऑक्सीजन भीतर को पशि आसे आ जोटा कि जर्मिनेशन हमें साहाଯ୍य करे 10 ରୁ 15% मॉइस्चर बाय मास हो जाए तो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहीदेली पेरिकार पर्यंत the fruits may be fleshy and as in guava orange mango etc or may be dry as in groundnut and mustard etc many fruits have evolved mechanism for disposal of seeds माने से कहला कि किछिटा फ्रुट्स रे फ्लेसी थाए जेमति गुआभार जतिके सीड्स थाए देखियो सेटा माने टिके खसरा खसरा टाइप रे जेमति ऑरेंज रो भी थाए फ्लेसी थाए आउ मैंगोर भी सेमति थाए किंतु आम ड्राए कहार कहार देखिए ग्राउंड नट है आलमंड है ये सब मैंने पी नट है ये सब है कौन टे मैंने सुखिला सुखिला थाए बुझेगा recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in an earlier class. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? In most plants, by the time the fruit develop from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. ମାନେ ଯେତିକି ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପାର୍ଟ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମନେ ଅଛି ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପାର୍ଟ ଥାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି କେବଳ ଓଭାରିଟା କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଆଉ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ଟା କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଆମର ସିଡ଼୍କୁ ବୁଝିହେଲା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଭାରି କନଭର୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଆଉ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ସିଡ଼୍କୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଫଲ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଥାଏ କିଛିଟା ଟ୍ରୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥାଏ ତ ସେଟା ସବୁ କ'ଣ however in a few species such as apple strawberry cashew the thalamus also contributes to fruit information thalamus कोटा कहउतले हम जो एटा एमती थिला एटा एमती थिला जो फ्लावर एमती जाउतला तो ए पोजीशन टाको थैलामस कहउतले जोटा मूल रे थाए थैलामस को जाय such fruits are called false fruit 1.5b देखो एटा थैलामस हेला एटा सब false fruit most fruit however develop only from the ovary माने जोड़ा थैलामस रु डेवलप हो जाइथिबो सेटा होची कोन फॉल्स फ्रूट जोड़ा ओवरी रु डेवलप होइतो सेटा होची हमरो ट्रू फ्रूट्स although in most of the species fruits are the results of fertilization there are a few species ठीक अछि तो किछिटा स्पेसीज थाए in which develop without fertilization such as fruit are called parthenocarpic fruits माने बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप हो पारंती तो सेडा से parthenocarpic कौन सेटा banana is one such example parthenocarpic can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless अच्छा से फ्रूट्स गुड़ा कौन था सीडलेस जो पूरा सीडलेस था सेटा होची कौन parthenocarpic fruits seeds offer several advantages to angiosperm firstly since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water seed formation is more dependable also seeds have better adaptive strategies for dispersal of to new habitats and help these species to colonies in other areas as they have sufficient food reserve young seedlings are nourished until they capable photosynthesis on their own से कहला कि से माने सफिशिएंट फूड रिजर्व करंती यंग सीडलिंग्स करंती माने कोन से माने सब नरिशमेंट दियंती जे पर्यंत से फोटोसिंथेसिस करिया पय कैपेसिटी तार हेई नाही से पर्यंत से माने ताको नरिशमेंट देबे ठीक अछि तो तापर गला सेटा तापर हम देखिबा the hard seed coat provides protection to young embryo माने जति हार्ड सीड कोट माने मंजीर जो बाहरटा जो मानकर हार्ड थाए से यंग एम्ब्रियो को कौन करती प्रोटेक्शन दियंती बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जेनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर आम एग्रीकल्चर बेसिस होची के ना सीड dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for stage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop the next season
Can you imagine agriculture in the absence of seeds or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and can't be stored? How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. In a few species, the seeds lose viability within a few months. Seeds of a large number of species live for several years. किछिटा years ପାଇଁ large number of species ସେମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, live କରନ୍ତି. There are several records of very old yet viable seeds. The oldest, that of Lupinus arcticus, exabited from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. A recent record of 2,000 years old viable seed of the dead palm, Phoenix dactifera, discovered during the archaeological exhibition at King Herod's place near the Dead Sea. Apomixis polyembryoni ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in the embryo sac? କେତେଟା egg ଅଛି embryo sac ରେ? ତ ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ. ଏଇଟା କିଛି ବି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେଇବି ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇବି ମୋ ତରଫରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ପରିକା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ତ ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ. ତ apomixis and polyembryony କ'ଣ? apomixis କ'ଣ, polyembryony କ'ଣ? Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species asteroids and grasses evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. Without fertilization produce seed produce କରିପାରୁଥିବ. ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ପାର୍ଥେନୋକାର୍ପି ନା ସେଇଟା, ହଁ ପାର୍ଥେନୋକାର୍ପିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଇପାରିବ. ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଆପୋମିକ୍ସିସ୍ କ'ଣ? ବିନା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସିଡ୍ ହେଉଥିବ. ଠିକ୍ ଅଛି, ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଟିକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପୋମିକ୍ସିସ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି. ଯଦି ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ. ଦସ୍ ଆପୋମିକ୍ସିସ୍ ଇଜ୍ from asexual reproduction that mixes sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction, division, and develops in the embryo without fertilization, more often as in many citrus and mango varieties. Some of the nuclear cells surrounding the embryo surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed referred to as polyembryony. ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ. Takes out some seeds of orange and squeeze them. Observe the many embryos of different sizes and shapes from each seed. ମାନେ ସବୁ seedରେ embryo ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି. ସେଇଟା polyembryony ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ. Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants, the progeny will segregate and don't maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly, and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomix,
there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year, and does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seeds industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic gene into hybrid varieties। तो एड़ा सब एबी जब जो साइंटिफिक वे सब लैबोरेटरी टेस्ट होची तो से सब टॉपिक रे कहिची। तो तापर एटा समरी अछि, समरी सरला पर एक्सरसाइज अच्छे, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 18 पर्यंत अच्छी। तो ये टोटाली क्वेश्चन आंसर मुझे कहीदेवी, प्रथम क्वेश्चन आंसर मुझे कहीदेवी, कही सारापर सब लंग क्वेश्चन गोटे वीडियो आसो, 2 मार्क्स गोटे वीडियो आसो, 3 मार्क्स गोटे वीडियो आसो, एमती तुम क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम अनुसार तो मुझे टोटाली पैटर्न गोटे गोटे वीडियो करके आनिबे। तो से पर्यंत चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करूँ, चैनल को लाइक करूँ, वीडियोस देखूँ, वीडियोस लाइक करूँ, सांग मान संगे शेयर करूँ जो जहाँद्वारा कि से बेनिफिट्स किछटा पाई पारे। तो से पर्यंत आपण मान देखा नेक्स्ट वीडियो रे। रहूची नमस्कार, धन्यवाद।